नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करुच्ची स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल रे आपण मैंने जानते आम गोटे नुआ चैनल भी गोटे लॉन्च करूँ एक्सक्लूसिव ओपीएससी स्टडी आईक्यू तेणु स्टडी आईक्यू पीसीएस रे भी आपण मैंने देखिपारे और एक्सक्लूसिव ओपीएससी स्टडी आईक्यू भी आपण मैंने देखिपारे ओडिशा रिलेटेड कंटेंट और ओपीएससी रिलेटेड कंटेंट एक्सक्लूसिवली ओपीएससी प्रिपरेशन पाई ओपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को आपण फॉलो करि परिबे। ठीक अच्छे आज मेन पर्पस वीडियो जो आम नहीं आसु तार पर्पस कौन आपण मैंने देखिपारे थंबनेल रे मंथली करंट अफेयर्स बेस्ड वीडियो एटा आपण मैंने जानी आम ओडिशा रिलेटेड मंथली करंट अफेयर्स रेगुलरली नहीं आसुचु एवं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स गुड़िक आपण द्वारा कहुई कवर करने जोटा कि आपण मान तरफ डिमांड आसी स्पेसिफिकली जो प्रिलिम्स आपणकर अच्छी से प्रिलिम्स पाई मु चेष्टा करी आपण को मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने तेणु प्रिलिम्स ओरिएंटेड टू द पॉइंट फैक्ट बेस्ड ही करवा कारण जो न्यूज रे अच्छी ताको एनालिसिस करवा ये सब आवश्यकता नहीं कारण ओबियसली प्रिलिम्स जो टाइप रो क्वेश्चन डिमांड करुच्ची से टाइप रो या प्रिलिम्स रे जो भली भाव रे क्वेश्चन आसीबार चांसेस अच्छी से जिनस को ही कवर करवा। वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व मु डिस्क्लेमर गोटे लगेबी या डिस्क्लेमर कहबी आपन को आपण मैंने देखिथिबे जो वर्तमान आमे जो वीडियो रे डिस्कशन करबा को जाउछु सेठी आपनकर जो एरिया गुडी को कवर होउची नेशनल इंटरनेशनल एवं स्टेट स्पेसिफिक कारण आपण मैंने जानिथिबे स्टेट स्पेसिफिक गोटे रु दुईटी क्वेश्चन आसुची इंटरनेशनल एवं नेशनल मध्य आसुची ए नेशनल इंटरनेशनल भितरे आपण जे देखिबे आपनकर डिफरेंट सेगमेंट्स गुडी को भी रहउची से को सेगमेंट्स गुडी को रहउची जेमती एनवायरनमेंट रिलेटेड भी रहउची जेमती इकोनॉमिक्स रिलेटेड भी रहउची लेट्स से रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस भी रहउची ठीक अछि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहउची तेणु मु आपण माने देखिथिबे जदि हमर यूट्यूब चैनल को आपण रेगुलरली फॉलो करूचंदी तेबे आपण माने देखिथिबे एनवायरनमेंट मु एक्सक्लूसिव गोटे वीडियो बनैथिली आई थिंक तार ड्यूरेशन जो थिला जनवरी 2024 रु जुलाई पर्यंत मु ताको देखि नेबी जो मंथ पर्यंत कवर हेइची जो गुडी को हेइनी मु डेफिनेटली ताको मध्ये कवर करबी। तो एनवायरनमेंट आमे ऑलरेडी एक्सक्लूसिव गोटे वीडियो रे कवर करिचु इकोनॉमिक्स भी आमे गोटे सेपरेट वीडियो रे कवर करिचु जनवरी रु टिल आई गेस जुलाई और अगस्त पर्यंत रिपोर्ट एंड इंडिसेस आल्सो वी हैव कवर्ड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आमे कवर करिचु तेणु जो मंथ पर्यंत एगुड़िक एक्सक्लूसिव या सेपरेट वीडियो रे कवर हेइची से मंथ पर्यंत मु नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रे ए गुड़िक कवर करी नाही कारण अननेसेसरली वीडियो को लेंथ इंक्रीज करवा कारण जेहेतु आप ऑलरेडी ताकू देखी थिबे जदि जो माने देखी नाहंती आपण प्लेलिस्ट रे जाई कि भी देखि परिबे तेणु जेहेतु ऑलरेडी आमे कवर करिचु पुणी थरे ताकू ये वीडियो माध्यम रे कवर करवा इट्स नॉट लाइक जस्टिफाइड टाइम पॉइंट ऑफ व्यू रू भी एवं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू रू भी एवं आपण को पई भी सेटा गोटे डिफिकल्ट कारण जदि ऑलरेडी आपण देखि सारछन तो पुणी थरे कोन पई ताकू अटेंड करिवे जो माने देखि नांती दे कैन गो फॉर दिस वीडियोस सेपरेटली बना जाइछि एनवायरनमेंट इको एंड रिपोर्ट इंडिसेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट रे अछि एवं पुणी थरे कहि रखे जो मंथ पर्यंत ये सब गुडी को कवर हेइतिला से मंथ पर्यंत ओनली एंड ओनली नेशनल इंटरनेशनल स्टेट स्पेसिफिक मु कवर करी जो मंथ टू एगुड़ी कवर है नथिबो से मंथ रे आमे कंप्लीट सेथरे कवरेज आमे करिबा ठीक अछि कंप्लीट करिबा मे बी मते जहा लागुछि मु जुलाई पर्यंत किछि जगह रे कवर करथिली किछि रो अगस्त पर्यंत कवर करथिली नेक्स्ट जो 2-3 मास मैक्सिमम रहउछि या 2-2.5 मास भीतर रहउछि तार भी न्यूज़ गुडी को मु कवर करिनेबी जतले मंथ वाइज मु करी करी चली जेमते एटा जनवरी आमे डिस्कस करूचे देन फेब्रुअरी मार्च एभली भाव रे आमे गोटे पर गोटे मंथ को डिस्कस करिबा एवं से समय मु एगुडी को डिस्कस करिनेबी ठीक अछि। तो ये थिला डिस्क्लेमर तेणु मु आपण मान को रिक्वेस्ट करिबी तो स्टार्टिंग रु डिस्क्लेमर टाको एटलिस्ट देखि नेबे तो पारे पुणी आपन को एटा आपन को तरफ रु ये न आसु कि सर आपन एनवायरनमेंट कवर कले नाही इको कवर कले नाही रिपोर्ट एंड इंडिसेस आपन छाड़ देले साइंस एंड टेक्नोलॉजी छाड़ देले तो तार छाड़ीबार रीजन होची या कारण ऑलरेडी आमे गोटे सेपरेट वीडियो माध्यम रे से गुडी को कवर करि सारिचे ठीक अच्छी स्टार्ट करने पूर्व मु कही रखे जो मैंने
आमर प्लान करूछंती कारण आपण माने जानिछंती डिसेंबर रे नोटिफिकेशन आसीबार अछि एवं जहा एक्सपेक्ट करा जाउची गुड और डिसेंट अमाउंट ऑफ वैकेंसी आसीबार अछि प्री प्लस मेंस रो लाइव फाउंडेशन बैच संकल्प बैच 8 ना रे आसुची एवं बैच रो स्टार्टिंग टाइम या डेट केबे आपण देखिबे 4th नवंबर 2024 8 am रे अछि तेणु डिस्काउंट मैक्सिमम पाइबा पई आपण कोड यूज करिवे कोड होची जेएन लाइव स्लाइटली आपण को कोर्स स्ट्रक्चर विषय कही रखुची कोर्स स्ट्रक्चर होची किछि एभली भाव रे 1000 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स अछि क्रक्स अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी अछि 1-to-1 मेंटरशिप अछि हैंड रिटन नोट्स अछि स्पेशल फोकस ऑन ओडिशा स्पेसिफिक टॉपिक्स अछि डेली होमवर्क थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर ईच लेक्चर फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वीकली करंट अफेयर सेशंस रहिबो मॉड्यूल वाइज टेस्ट दिया जिवो एक्सक्लूसिव सेशन फॉर द एसे राइटिंग एंड एनरिचमेंट अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ लाइव लेक्चर्स प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज भी रोची बाकी आपण जदि चाहिबे फैकल्टीज मानक आपण लगातार भाव देखुतबे यूट्यूब रे जदि चाहिबे आपण किसी डेमो लेक्चर्स भी देखि परिबे आपणकर गोटे ब्रॉडर आइडिया पई कि एक्जेक्टली को टाइप रो क्लासेस गुडी को होची एवं को लैंग्वेज रे होची केबळे भाव रे बुझौचंती फैकल्टीज माने सो ये थिला गोटे रफ आइडिया आपणकर त मु जेमते आपण कहली सिंपली आपण जाई केटी बाय नाउ करिवे बाय नाउ कला परे आपण को लॉगिन मागिबो लॉगिन ने आपण नंबर एंट्री करिवे कोड आसीबो आपण नंबर को कोड एंट्री कला परे किछि एबळे भाव रे आसीबो पेज एठी ऑफर्स अवेलेबल को जिवे ई जगह रे आपण एंट्री करिवे जेएन लाइव करिगी जेएन लाइव एंट्री कला परे अप्लाई कला परे आपण देखंतु एठी हेटा केते हेगला 9999 हेगला तो बाय नाउ करिके आपण को भी मोड रे आपण प्रोसीड टू पे करिकी पेटीएम हो क्रेडिट कार्ड हो वॉलेट नेट बैंकिंग थ्रू रे आपण पे करि परिबे मन रखतंतु वैलिडिटी होची 24 मंथ्स पई ठीक अछि अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स से सब जिंस आपण देखि परिबे एनीवे कमिंग टू आवर मेन डिस्कशन कोड भूलिबे नाही टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट नाउ लेट्स बिगिन चलो तो स्टार्ट करियो फर्स्ट होची पीएम किसान स्कीम देखो टू द पॉइंट मु जिनस को रखी तेणु बेसी एलाबोरेट करबा दरकार नहीं फैक्ट्स ऊपर बेसी फोकस करबा टू द पॉइंट प्रिलिम्स ओरिएंटेड जो माने एवं जो भी आपण देखिथिबे विगत किछि मास धरिकी आमे जहाँ भी वीडियो नहीं के आसुचु प्रिलिम्स ओरिएंटेड कारण जो माने प्रिलिम्स दउचंदी सेमानकर प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल को नहीं जिबा पई ये प्रिपरेशन रो किछि कंट्रीब्यूशन हमकु आमे चाहूछु करबा पई सेदि में आपण देखिबे टू द पॉइंट प्रिलिम्स रिलेटेड कांसेप्ट गुड को हम नहीं के आसुचु ठीक अछि तो पीएम किसान स्कीम आपण जानिथिबे केते टंका दिया जाउची 6000 टंका प्रति वर्ष दिया जाउची काहाकू फार्मर्स माननकू कृषक माननकू 6000 टंका प्रति वर्ष तीनोटी इंस्टॉलमेंट रे दिया जाउची 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स तीनोटी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द सेंस की 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3 ठीक अछि ये होची 6000 डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट आधार एनेबल्ड बैंकिंग सिस्टम जो अछि बैंक अकाउंट रे सीधा ट्रांसफर होची ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इन द सेंस की इनिशियली जतोले लॉन्च करा गला कुआ गला कि केवल हमें मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को कवर करिवा बट लेटर ऑन से कैप को हटे दिया गला नाउ एवरी काइंड ऑफ फार्मर वुड बी एलिजिबल टू गेट दोस बेनिफिट्स मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स होचंदी को माने ना जहां पाखरे 2 हेक्टर रो कम आपणकर अछि लैंड होल्डिंग मार्जिनल होची 0 to 1 हेक्टर आउ स्मॉल होची 1 to 2 हेक्टर आपण कहि परिबे ठीक अछि इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स लॉन्च्ड इन फेब्रुआरी 2019 फेब्रुआरी 2019 रे एटा को लॉन्च करा जायथला या इनिशिएट करा जायथला फेब्रुआरी 2019 रे एटा होची कोन ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपण माने जानिथिबे दुईटी प्रकार रो अछि गोटे होची सेंट्रल सेक्टर आउट होची सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी अछि स्पॉन्सर्ड स्कीम रे जनरली कौन देखा मिले जोटी शेयरिंग देखा मिले लेट्स से 70% यूनियन गवर्नमेंट 30% होची स्टेट गवर्नमेंट बट सेंट्रली सेक्टर स्कीम रे होची कंप्लीटली यानी कि 100% फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ठीक अछि इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ये होची इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपण कहि परिबे ठीक अछि पीएम किसान स्कीम हेगला नेक्स्ट देखिबा आयुष्मान भारत केवे लॉन्च करा गला 2018 रे एटा को लॉन्च करा गला रेकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 2018 रे एटा को इंप्लीमेंट करा गला मिनिस्ट्री के
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा एटा को इंप्लीमेंट करा जाउची एम कोन या एम और ऑब्जेक्टिव जोटा हम कहूचे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज समस्तन को पई या समस्तन को जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अवेल करैबा पई फंडिंग होची कोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी कि विथ ए शेयर गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट तेनु स्टेट एवं यूनियन रो शेयरिंग रे एटा हबो कंपोनेंट्स कोन दुईटी कंपोनेंट्स अछि कवरिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ केयर टू द पीपल फर्स्ट होची हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोन ना पर्टिकुलरली जदि आपण देखिबे जो आपनकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स गुडी को अछि से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को वर्तमान हमें नामकरण करा जायछि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ता माने कोन माने होची प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन by providing comprehensive health care including non communicable diseases maternal and child health services तेणु आगुरु हेल्थ एंड वेलनेस रे माने होची एक तो क्यूरेटिव प्लस प्रिवेंटिव आपण कहि परिबे क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स सेमती वैक्सीनेशन हमें कहीं की दउछ प्रिवेंटिव मेजर्स क्यूरेटिव माने हॉस्पिटल रु आपण को ट्रीटमेंट मिलिबो जो डिजीज होची ता पई क्यूर पई आपण को हॉस्पिटल फैसिलिटीज मेडिसिन से सब मिल तेणु से ना दिगला हेल्थ एंड वेलनेस ठीक अच्छे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू प्रोवाइड हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन ठीक अच्छे हेल्थ कवर 5 लाख पर फैमिली हिसाब रे पर ईयर दिया जाउछि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर रे थर्ड कोन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तेणु तीनोटी कंपोनेंट रे को इंप्लीमेंट करा जाउछि फर्स्ट होची वेलनेस सेकंड होची प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थर्ड देखंतु एटा होची आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन केबे लॉन्च करा गला 2021 रे लॉन्च करा गला तर काम कोन ना यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडीज को क्रिएट करिवा जनरेट करिवा फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स to help hospitalization, insurance forms and citizens access to health records electronically when required. तो generally आपण देखिबे कोन ना डिजिटल हेल्थ आईडी इन द सेंस कि गोटे यूनिक आइडेंटिटी नंबर गोटे क्रिएट करा जिवो यूनिक आइडेंटिटी नंबर से यूनिक आइडेंटिटी नंबर आपण ऑल इंडिया लेवल रे जोठी भी से नंबर को एंट्री करिवे से पेशेंट रो डिटेल्स आपण को एटी शो करिवो ता फल सुविधा कौन हम एक तो ट्रीटमेंट इजी हो आपंकर ट्रीटमेंट ऑल इंडिया लेवल रे आपण जोठी भी जानतु सेमती नुहे कि आपण जोठी की जिबे आपण मूलरू पुण थे स्टार्ट करने को पड़े कि नहीं ये पेशेंट रो प्रॉब्लम है या ये डिटेल सेमती नहीं आपण जोठी गले कौन हिस्ट्री पास्ट रिकॉर्ड कौन अच्छी हिस्ट्री कौन अच्छी से अनुसार ट्रीटमेंट ही आपन को करा जिवो सेकेंड जिनस हूँ जदि इंश्योरेंस फार्म गुड्स का अच्छी इंश्योरेंस गुड़िक अच्छी इंश्योरेंस फार्म गुड़िक अच्छी से माने भी मध्य इजी हम से इंश्योरेंस जो पेमेंट करवा एवं बेनिफिशियरी मान इजी हम मध्य इंश्योरेंस रो फायदा उठेवा यानी कि बेनिफिट्स गुड़िक नवा ता छड़ा सिटीजन्स मानक भी मध्य इजी रहिबो कोन जो रेकॉर्ड गुड़िक एक्सेस इजिली रही पारिबो तेणु से आम चेष्टा करूँ कौन ना डिजिटल मिशन माध्यम रे यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करैबा पई नेक्स्ट एनटीपीएस वन नेशन वन पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम as one nation one pass regime one nation one pass regime ठीक अछि ट्रांजिट पास सिस्टम है ठीक it aims to facilitate seamless transit of timber bamboo and other forest produce across the country generally आपण माने देखिथिबे जेतोले टिम्बर को सप्लाई करा जाए रोड ट्रांसपोर्टेशन हो किंबा जो लॉजिस्टिक केस रे देखिबे टिम्बर को जेतोले ट्रांसपोर्ट करा जाए से केस रे स्लाइटली गोटे सस्पिशियस जिंस थाए माने प्रॉपर अथॉरिटी रो यू नीड परमिशन बिकॉज चांसेस अछि कि से इलीगल ट्रांसपोर्ट हो थाई पारे ये सब जिंस को आखि आगे रखी सेटा को सिक्योर करबा पई तेणु विथ परमिशन ही आपण ट्रांसपोर्ट करि परिबे एवं जेतले इंटर स्टेट होउची आहुरी प्रॉब्लम देखिबा को मिले तेणु सेति पई से जो स्मूथ ट्रांजिट करबा पई वन नेशन वन पास सिस्टम कर दिया जाइछि एंड वंस यू विल गेट दैट पास यू कैन मूव अक्रॉस द कंट्री विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और एनी हिंड्रेंस तो टिम्बर हो बैम्बो हो अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो आपण सीमलेसली ट्रांसपोर्ट करि परिबे द एंटायर प्रोसेस देयरफॉर मेक्स इट क्वाइट
time consuming process causing hurdles in transporting timber and forest products. ठीक ଅଛି, timber and forest products, one nation one pass. तो question जदि आसे कि one nation one pass is related to which of the following are related to what? Simply होची timber, bamboo and other forest produce for seamless transit पाए, transportation पाए. Next, Amrit Bharat train, new train being inducted into the Indian Railways. Amrit Bharat, मनरिक्ति में नाटी Amrit Bharat. Keeping in mind the comforts and travel needs, these trains will be non-air conditioned with second class unreserved coaches and sleeper coaches. तो यदि आपण देखिबे आमे वंदे भारत ऊपर काफी हाईलाइट करूछु, बट अमृत भारत ट्रेन भी इंट्रोड्यूस करा जाई छी. नॉन एयर कंडीशनड ट्रेन, एयर कंडीशन ट्रेन रहबो या नॉन एसी सेकंड क्लास नॉन रिजर्व्ड कोचेस एंड स्लीपर कोचेस भी रहिबो अमृत भारत ट्रेन रे. ठीक अछि. नेक्स्ट, 66th DRDO Foundation Day. The organization was founded 1st January in the year 1958. तो ही पारे प्रश्न आसी पारे कि DRDO Foundation Day या DRDO Day केबे हमें सेलिब्रेट करू 1st January एवं केबे सेटा को सेटअप या एस्टैब्लिश करा जायतिला 1958. ठीक अछि. It was formed from the amalgamation of the then already function को संस्था गुडी को amalgamation फଳରେ एटा को करा जायतिला. फर्स्ट होची टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विथ डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन. ये तीनोटी संस्था जो थिला से तीनोटी संस्था को अमेलगेट करिके एटा को बना जायतिला. ठीक अछि. DRDO 1st January. Next, India's first submarine tourism. India's first submarine tourism. Gujarat government is set to introduce India's first submarine tourism. तेणु इठी दुईटी जिनस मन रखिए. गोटे हूँ गुजरात गवर्नमेंट द्वारा ये फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म को इंट्रोड्यूस करा जायछि. It will enable tourists to dive 100 meters below the sea in a submarine to experience the marine life around the island. तेणु marine life जो around the island अच्छी marine life को experience करेवा पाई 100 meters तळ को dive करिवे को माने टूरिस्ट माने. तेणु एटा होची फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म गुजरात स्टेट द्वारा इनिशिएट करा जायछि. The place is believed to have submerged the city which was created by Lord Krishna according to mythological texts. So particularly जदि आपण देखिबे जो द्वारका रीजन जोटा अछि ता विषय को जाउछि प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर मोदी भी विजिट करथिले. तो एटा को इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म बोली को जाउछि, मैरीटाइम टूरिज्म. एटा Amendment of Central Civil Services Pension Rules 2021. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions announced that provision of Central Civil Services Pension Rules 2021 have been amended. तो कौन amendment करा जायछि सेटा को देखिबा. Female government employees to nominate their child or children for the family pension. Female government employee जो मन अछंती से माने pension, suppose after death of female employee, who would be the next beneficiary or pension को नवा पे किए eligible है. तो child or children would be the next beneficiary of the family pension if in case the husband सहित सेमानकर divorce proceedings गुड़िक चली थी. ठीक अछि. The rules provided for the family pension to first go to the surviving spouse. कारण वर्तमान present condition कौन अछि फैमिली पेंशन टी सर्वाइविंग स्पाउस पाखक जीवा कथा as per the current rule. सेटा को अमेंड करा जाउछि कि जदि से केस रे डिवोर्स केस चली छी या सेपरेट ये सिस्टम टी चली छी तो से केस रे जो प्रोजेनी यदि चाइल्ड और चिल्ड्रन वुड बी द नेक्स्ट नोमिनी हिसाब रे आपण तको करि परिबे. सो दिस इज द अमेंडमेंट रूल्स ऑफ पेंशन 2021. Exchange of nuclear installation 2024.
exchange of nuclear installation 2024. India and Pakistan on January 1st exchanged a list of their nuclear installation under a bilateral pact. तो गोटे bilateral pact अनुसार प्रति वर्ष इंडिया एंड पाकिस्तान सेमानकर न्यूक्लियर कारण दुईटी जाक न्यूक्लियर पावर स्टेट न्यूक्लियर वेपन दुई जन जाक पाखरे अछि तेणु दुई जन जाक सेमाने कौन करती ना दे डू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन दे डू शेयर द इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर inform each other of nuclear installation and facilities prohibits the two sides from attacking each other's atomic facilities. तो यार main benefit कौन होगा? It prohibits the attacking of nuclear atomic facilities towards each other, the two sides. The agreement was signed on 31st December 1988 and entered into force on 27 January 1991. तो एटा को एग्रीमेंट साइन केबे हितला 1988 रे साइन हितला एवं एंटर्ड इनटू फोर्स यानी कि इंप्लीमेंट केबे हितला 1991 रे. Also the list of prisoners were exchanged. ठीक अछि तो ये पर्टिकुलर पैक्ट द्वारा जो प्रिजनर्स माने भी थांती से माने मध्य एक्सचेंज हितांती पर्टिकुलरली वॉर ऑफ प्रिजनर्स तक को कहा जाए. नेक्स्ट UN Statistical Commission membership. UN Statistical Commission membership एटा केबे एस्टैब्लिश करा गला 1947 रे. एटा एक्चुअली कोन ना हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम. हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम. ये कमिशन रो केते मेंबर कंट्रीज माने अछंती 24 मेंबर कंट्रीज. कमिशन रो केते मेंबर कंट्रीज माने अछंती 24 मेंबर कंट्रीज. मेंबर कंट्रीज माने को भली भाव रे यार तर एलिजिबिलिटी या तर प्रोसेस कोन जदी कहिबे स्पेसिफिकली ना दे आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. दे आर इलेक्टेड. ठीक अछि. नेक्स्ट होची India started its 4-year term as a member of the United Nations Statistical Commission. तो इंडिया वर्तमान मेंबर हैला एवं इंडिया तार मेंबरशिप रो जर्नी 2024 रु स्टार्ट कला. यदि प्रश्न आसे कि इंडिया इज मेंबर ऑफ दिस yes or no, of course yes. ठीक अछि. UN Statistical Commission membership. Smart 2.0 scope for mainstreaming Ayurveda research among teaching professionals. Promote robust clinical studies in priority areas of Ayurveda with Ayurveda academic institutions and hospitals. The Central Council for Research in Ayurvedic Sciences along with National Commission for Indian System of Medicine has launched. तो Smart 2.1 रो मेन पर्पस कोन थिला ना आयुर्वेदिक रिसर्च को प्रमोट करिवा एनरिच करिवा मेन स्ट्रीम को नहीं कि आसीबा. ठीक अछि. तो कहा द्वारा एटा को इनिशिएट करा जाउची सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस along with National Commission for Indian System for Medicine. ये दुईटी संस्था द्वारा एटा को लॉन्च करा जाइछि स्मार्ट 2.0. ठीक अछि. इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा. Indian landslide susceptibility map. इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप. ये मैप को डेवलप किए करिछि. मैप होची लैंडस्लाइड रिलेटेड गोटे मैप डेवलप करा जाइछि आईआईटी दिल्ली द्वारा. फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप ऑफ इंडिया. फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप ऑफ इंडिया. इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई द मोस्ट डेंजरस एरियाज and help allocate resources for mitigation strategies better. तेणु एक तो डेंजरस हाई रिस्क जोन को आइडेंटिफाई करिवो प्लस आइडेंटिफिकेशन हवा द्वारा एटलीस्ट गवर्नमेंट कौन करि परिवो स्टेप्स नहीं परिवो टू मिटिगेट. कारण डिजास्टर मैनेजमेंट रो वर्तमान मेन डिजास्टर मैनेजमेंट रो यदि आपण जानिथिबे आगुरु थिला कोन ना से जो क्यूरेटिव यानी कि रिहैबिलिटेशन राइट रीसेटलमेंट एगुड़िक माने आफ्टर दिस थिंग आफ्टर द इवेंट ऑफ और आफ्टर द डिजास्टर रिलीफ रिहैबिलिटेशन ये सब जिनस थिला. बट नाउ वी आर फोकसिंग मोर अपन मिटिगेशन. तेणु मिटिगेशन को जेहेतु आम अधिका फोकस करूचे
ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ we need to identify all those dangerous areas and help allocate resources for the mitigation strategies better. Next, प्रेरणा प्रोग्राम. प्रेरणा प्रोग्राम को कहा द्वारा लॉन्च करा गला? एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम को लॉन्च करा गला. An experiential learning program, Prerna, an experiential learning program for students in classes 9 to 12. Class 9 ରୁ 12 class पर्यंत students ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ learning program start करा जाउची. This residential initiative held weekly, caters of 20 selected students and takes place at a vernacular school in Mehsana, Gujarat. ठीक अछि. So held weekly, साप्ताहिक भाବରେ एटाକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ. 20 selected students ଏବଂ vernacular schools गुड़िकरे एଗୁଡିକୁ promote କରାଯିବ. Experiential learning class 9 to 12. Next, पृथ्वी विज्ञान स्कीम. पृथ्वी विज्ञान स्कीम को मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च करा गला? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. The scheme would be implemented between 21 to 26. It also seeks to promote exploration of polar and high seas region of Earth. It seeks to promote exploration, कोटा exploration करिवा पई, polar and high seas regions of Earth towards the discovery of new phenomena and resources. ठीक अछि, new phenomena and resources. तो geographical related जदि किछि changes होउची, किछि नुआ रिसोर्सेस रो ट्रेस मिलुची, से सब को डिस्कवर करिवा पई पृथ्वी विज्ञान स्कीम को लॉन्च करा जायछि. एवं यार नारु मध्ये आपण आइडेंटिफाई करि परिबे पृथ्वी विज्ञान, द नॉलेज अबाउट द अर्थ जदि आपण कहि परिबे. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी. Supreme Court Judge Justice B.R. Gawai has been nominated as the chairman of the Supreme Court Legal Service Committee. तेणु सुप्रीम कोर्ट रो लीगल सर्विस कमिटी रो चेयरपर्सन हिसाब रे जो करंट जस्टिस जे अछंती बी.आर. गवाई को नॉमिनेट करा जायछि. ठीक अछि. ई जो कमिटी अछि से कमिटी को केवे फॉर्म करा जायतिला? 1987 रे. लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 रे सेक्शन 3A रे एटा को फॉर्म करा जायतिला. It will provide free and competent legal services to the weaker sections of the society. ठीक अछि. यार मेन पर्पस कोन? पर्पस होउची फ्री एंड कंपिटेंट लीगल सर्विसेज. बहुत गुडे I mean a certain percentage in our society, percentage of population in our society, they cannot afford the legal services. They cannot hire a lawyer to the weaker sections of society in case of falling under the court's jurisdiction. Section 3A of the Act states that central authority, that is the National Legal Services Authority or NALSA, shall constitute the committee. So a committee को constitute के करिवो, एटा को करिवो central authority or the NALSA, National Legal Services Authority. Main purpose कोन यारो? Free and competent legal services to the weaker sections of the society. Work for food algorithm recently presented at the International Joint Conference on Artificial Intelligence. तो वर्क फॉर फूड algorithm जदि आपण देखुचंती तबे ये कहा सहित रिलेटेड इंटरनेशनल जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑन AI, artificial intelligence. They have developed an order assignment algorithm. ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା order assignment algorithm determines which delivery agent gets which order to ensure that each delivery person earns more than the minimum wage. तो जो फूड डिलीवरी जो एग्जीक्यूटिव्स माने अछंती फूड डिलीवरी ऐप रे सेमानंकु एटा हेल्प करिवो टू get their delivery assignment, plus they will earn certain more wage than the minimum wage. IIT Delhi have proposed a solution to ensure fair compensation for food delivery agents and minimizing the platform cost. तेणु IIT Delhi कौन कौची जो प्लेटफॉर्म कॉस्ट बर्तमान चार्ज करुचंती डिफरेंट ई कॉमर्स वाले से ई कॉमर्स वालंकर प्लेटफॉर्म चार्ज को कम कर एवं बेसी
पेमेंट कहा को दियो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को। नेक्स्ट देखिबा न्यू एमिशन टेस्ट रूल्स फॉर द व्हीकल्स। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे has nominated या notified new emission test standards for the vehicles seeking approval under the BS6 emission norms। तो BS भारत स्टेज 6 emission norms को लेके न्यू नोटिफिकेशन या न्यू नोटिस या रूल्स आना चाहिए अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। All bi-fuel vehicles with flex fuel options will have to take both gaseous pollutant and particulate matter pollutant test। तो जो vehicles गुड़िक अच्छी जो मैंने BS6 रो emission जो clearance नवापे आसुचंदी से माने को दुईटी टेस्ट देखी they have to undergo two tests। first होची कोनो ना one is like particulate matter जोटा अच्छी ठीक है PM 2.5 ये सब जिनसे particulate matter plus आपनकर gaseous pollutant। vehicles that run hydrogen only have to undergo nitrogen oxide test। particulate matter mass and number limits only apply to cars with direct injection engines। CO2 emission and fuel consumption shall be measured as per procedure laid down in the AIS 137 as amended from time to time। तो simple जिनसो इतनी की मन रखते हुए new emission test rules for vehicles Ministry of Road Transport and Highway and two-way process अच्छी गोटे होची PM matter या particulate matter जोटा कोचे PM and another one is the gaseous pollutant। next Drishti 10 Starliner, the Indian Navy unveiled the first indigenously manufactured Drishti 10 Starliner UAV unmanned aerial vehicle in Hyderabad। Okay, it has 36 hours endurance and 450 kg payload capacity। तो जो unmanned aerial vehicle जो अच्छी आपनकर UAV ड्रोन भी ताको हमें कहि परिबा। तो से ड्रोन रो मेन पर्पस कोन या पर्टिकुलरली फंक्शन तारा देखिबे 36 आवर्स रो एंड्योरेंस अछि एवं पेलोड कैपेसिटी से केते कैरी करिवो 450 ठीक अछि। इट इज द ओनली ऑल वेदर मिलिटरी प्लेटफॉर्म विथ नाटोस स्टानाग या स्टानाग 4671 certification for the UAVs systems airworthiness। तो दृष्टि 10 Starliner UAV जोटा एटा होची फर्स्ट इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इंडियन नेवी एटा को अनवील करची ठीक अछि। ऑल वेदर मिलिटरी प्लेटफॉर्म विथ नाटोस स्टानक 4671 सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इंडिया इनोवेशन वीक 2024, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade is organizing the Start of India Innovation Week from January 10 to 18। So, Start of India Innovation Week को केवे celebrate करा जाए 10th through 18th January। It also features the result declaration and felicitation ceremony for the National Startup Awards 2023 and 4th edition of the state's startup ranking framework। ओके तो फेलिसिटेशन भी सेरेमनी करा जाउची नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स रो। विंग्स इंडिया 2024, Wings India 2024, Hyderabad's Begumpet Airport is set to host the aviation extravaganza Wings India 2024। तो Wings India बेगमपेट एयरपोर्ट द्वारा होस्ट करा जाउची कहा द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाउची एटा ऑर्गेनाइज करा जाउची मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड FICCI, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड FICCI। दिस 4-day biennial spectacle promises to be a showcase of cutting edge aviation technology and machinery। तो particularly Wings India 2024 रो मेन पर्पस कोन पर्पस होची कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी अच्छी ताकू शो करेबा यानी कि शोकेस करेबा।
ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ विंग्स इंडिया 2024 हूँ गोटे बाइनियल स्पेक्टेकल प्रॉमिसेस बाइनियल माने 2 वर्ष को थरे जोटा हूँ प्रति 2 वर्ष रे थरे बाइनियल lentil production in India 2023. The country's masoor या lentil production is estimated to touch an all-time high of 1.6 million ton in 23-24 Rabi season on higher acreage. Masoor production stood at 1.55 million tons in 22-23 Rabi season. In the ongoing Rabi season, more area has been brought under the masoor crop. देखो क्वेश्चन जदि लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपण देखिबे यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ऊपर प्रश्न से माने पचारुचंदी इन द ऑनगोइंग रावी सीजन मोर एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर द मसूर क्रॉप द टोटल मसूर एकरेज हैज इंक्रीज्ड 1.94 million hectare as of January 12 in the ongoing rabi season. This was 0.83 million hectares in the year ago period. So you will find that 1.6 million tons in the 23-24 Rabi season on higher acreage जदि आपण देखिबे lentil और मसूर विषय रे एटा कहूची अनुभव awards scheme 2024 Department of Pension and Pensioners Welfare had launched an online platform entitled Anubhav Portal 2015 रे एटा को लॉन्च करा जायतला अनुभव पोर्टल को अनुभव पोर्टल रो मेन काम कोन काम होजी शेयरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ रिटायरिंग और रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज while working with the government they will share their experiences so that जो new comers माने अछंदी new employees माने अछंदी they will learn from those experiences so that is the reason the name is Anubhav Award Scheme 2024 Anubhav Award Scheme 2024 Mulya Prabha 2.0 UGC has been issuing regulations jar na hochi Mulya Prabha it seeks to inculcate human values and professional ethics main kama kono na human values को inculcate करा जिवो and professional ethics को inculcate करा जिवो यार ये example आपण देई परिबे आपनकर paper for ethics mains रे मूल्य प्रभा in higher education institutions जो higher educational institutions गुडी को अछंती समान पाखरे human value and professional ethics it aims to build value based institutions by orienting individuals and institutions towards developing a deep respect for the fundamental duties and the constitutional value and bonding with the country let's say आपण देखिबे fundamental duties रे कोन अछि ना promoting scientific temperament right आपण rich heritage and culture को preserve करिबा protecting the environmental and ecology ई सब जिंस गुडी को जो अछि आपनकर डीपीएसपी हो एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज हो ताकू इनश्योर करा जिवो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माध्यम रे जदि इंस्टीट्यूशंस से गुडी को इनकॉलकेट करिवे दैट विल ट्रिकल डाउन टू द इंडिविजुअल लेवल एज वेल जोटा कि तार मेन पर्पस मूल्य प्रभा नेक्स्ट नीति आयोग रिपोर्ट ऑन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया दैट हैज बीन डिक्लाइंड 29.17% केवे थिला 2013-14 रे now this has been decreased to 11.2% 28% 2022-23 रे 22-23 रे सेटा कमी की कते हिची 11.28% a total of 24.82 crore individuals in India escaped multidimensional poverty over the last 9 years लास्ट 9 वर्ष भितर 24.82 करोड़ इंडिविजुअल्स कोन गले से माने पॉवर्टी लाइन रो बाहर को आछन उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इटा को मन रखतिबे कि उत्तर प्रदेश रे हमें लार्ज या सबुठु अधिका डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ पुअर पीपल हमको देखिबा को मिली छी इट इज फॉलोड बाय बिहार एट 3.77 करोड़ यूपी रे कते अछि 5.94 करोड़ बिहार रे कते अछि 3.77 करोड़ मध्य प्रदेश रे कते अछि 2.3 crore and Rajasthan at 1.87 crore. The pace of decline in poverty headcount ratio using exponential method was much faster between 1516 to 1921. Multidimensional poverty is measured by improvement in health, education and standard of living.
improving health, education, and standard of living. BSI ISO 27001 2022 certificate. Haldia Petrochemicals becomes India's first BSI certificate, ISO 27001 2022 petrochemical firm. ତେଣୁ ହଳଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି BSI ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ISO 27001 पेट्रोकेमिकल फार्म। ये सर्टिफिकेशन को एक्चुअली प्रोवाइड किए करे, प्रोवाइड करे यूनाइटेड किंगडम बेस्ड सर्टिफिकेशन बॉडी। यार मेन ऑब्जेक्टिव कौन, पर्पस कौन, कहीं की दिया जाए ना, इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी management system to provide continued confidentiality, integrity, and availability of information as well as the legal compliance. So information security management system बोली एटा को आपण कहि परिबे, information security management system to provide continued confidentiality, integrity, and availability of information. Operation Sarvashakti. Indian Army is launching a large-scale counter-terror operation. Counter-terror operation ita Operation Sarvashakti. It raided the Poonch and Rajouri region to flush out terrorists that have been hiding and spreading reign of terror in the forested region. The operation is reportedly modeled after Operation SARP Bas conducted in 2003 and 4 in the same region. So Operation SARP Bas is counter-terror operation. Operation Sarvashakti is also counter-terror operation by Indian Army and in Poonch Rajouri region. Poonch Rajouri region. Next, National Startup Award 2023. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, the government awarded 20 startups across 15 categories. 15 categories, 20 startups. Generally, Coco area re semane douchandi award. Women-led innovation, number 1. Number 2, next gen innovator, champions of cultural heritage, pivot pro award, among others. कुको मान को मिली देखो स्टार्टअप एक्सियल एरो सेक्टर हो डिफेंस, को स्टेट रा तेलंगाना, कंट्री क्ले OPC हैंडीक्राफ्ट्स दिल्ली, ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजी हेल्थ टेक कर्नाटका, अत्सुया टेक्नोलॉजीज क्लाइमेट टेक तमिलनाडु, SNL Innovations Agritech Rajasthan, AMSA Technologies Agritech Maharashtra, Nanosep Solutions Biotech Delhi, Paper Products Sustainability Karnataka, A Typical Platform HR Tech Jharkhand, Chef Automation Services Robotics Andhra. So these are few like startups which are given this National Startup Award 2023 in different categories. ठीक है जी. Next, Asra Missile. Asra Missile होची इंडिजेनसली डेवलप्ड, एटा को मन रखते इंडिजेनसली डेवलप एयर टू एयर मिसाइल कहा द्वारा डेवलप करा जाइछि, DRDO द्वारा. रेंज होची केते 100+ किलोमीटर. अस्त्र इज बियॉन्ड विजुअल रेंज. एयर टू एयर जेहेतु अछि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि आपण जत्ते पर्यंत आपण देखि परिबे ताठो अधिक लंबा एटा जीवो এবং 100+ किलोमीटर होची मिसाइल रेंज. अस्त्र मिसाइल रेंज होची 100+ किलोमीटर. नेक्स्ट, Samabesa project. Samabesa project. iSTEM is launching a major project called Samabesa. तो iSTEM कौन? Indian Science Technology Engineering Facilities Map. iSTEM कौन प्रोजेक्ट करुची? Samabesa. मेन यार पर्पस कौन ना, रिसर्च कोलैबोरेशन इन इंडिया by enhancing accessibility to facilities and laboratories. Suppose universities, right? Specific institutions, right? ये सब जिनस गुड़िक कोलाबोरेशन माध्यम रे को भली भाव रे लैबोरेटरीज हो, ये सब जिनस गुड़िक के भली भाव रे रिसर्च को अपग्रेड करा जिवो, रिसर्च को आहुरी प्रमोट करा जिवो. The project is working towards optimizing resource utilization nationwide. The research or the industry looking to avail advanced scientific equipment can connect with the institution that has equipment they are looking for
are rented conduct their experiments through iSTEM portal. ତେଣୁ iSTEM ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ या कोऑर्डिनेशन माध्यम रिसर्च को कंटिन्यू करें जमती मुझे आपको कहली से यूनिवर्सिटीज हूँ स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव जो इंस्टीट्यूट्स गुड़िक अच्छी से हूँ ठीक अच्छे जो बाकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस गुड़िक हूँ मे बी प्राइवेट सेक्टर भी हूँ तो गोटे कोऑर्डिनेट माध्यम कोऑर्डिनेशन माध्यम जो भाव रिसर्च काम को आगे नि समवेश प्रोजेक्ट रे distress alert transmitter. ISRO has developed an improvised distress alert transmitter that it has advanced capabilities and features for the fishermen at sea to send emergency messages from the fishing boat. ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ जो ଦାନା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଫସିକି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା तो सेमानक पाखरे ये डिवाइस माध्यम से कौन करें इमरजेंसी केस रे मेसेज सेंड करें द फर्स्ट वर्जन ऑफ दैट हैज बीन ऑपरेशनल सिंस 2010 by using this message were sent through a communication satellite received at a central control station Indian Mission Control Center. Here the alert signals are decoded for the identity and location of the fishing boat. एटा को डिकोड करा जाए कि को जगह रो आसी छे एवं बोट टी को जगह रे एग्जैक्टली अछि यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन द एमआरसीसी यानी कि एमआरसीसी coordinates to undertake search and rescue operations to save the fishermen in distress. So distress alert transmitter. Pradhan Mantri Suryodaya Yojana. Under the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana, 1 crore household will get rooftop solar across the nation. Mandaktivate 1 crore household with rooftop solar across the nation. Self-reliant in the energy sector. Main purpose hochi kono self-reliance, atmanirbharta. Rooftop solar panels are the photovoltaic panels installed on the roof of a building which is connected to main power supply unit. Rooftop solar panels रे आपनकर solar energy produce होबो and that will be connected or that is connected with the power supply units of a household. तो घर को आपनकर electricity मिली परिबो. It reduces the consumption of grid connected electricity and saves electricity cost. Solar power installed capacity in India has reached to 73.31 gigawatt as per the December 2023. ठीक है, has reached around 73.31 gigawatt December 2020. Meanwhile, rooftop solar installed capacity is around 11.08 gigawatt as of December 2023. In 2014, the Union government launched rooftop solar program that aimed to achieve a cumulative installed capacity of 40,000 megawatts or 40 gigawatts by 2022. ठीक है, cumulative installed capacity of 40,000 megawatts or 40 gigawatts by 2022. Next, Vijay Raghavan panel report. The 9-member committee has recently submitted a comprehensive report addressing concern about the functioning of the DRDO. Functioning of the DRDO विषय Vijay Raghavan panel report, 9-member committee report. कौन recommend कले? Setting of close to 10 national level laboratories facilities instead of existing 40 or more DRDO labs across the nation. तो तांग कहया कथा होची कि भाई setting of close to 10 national level laboratories दरकार rather than the existing 40. तेणु ताकू कम करिवार अछि. The setting of 5 national test facilities have also been recommended, which will be open to private players for testing their weapon system. तेणु national test facilities 5टी national test facilities भी खोलिबा दरकार for whom private sector so that they can also test their weapon system. Efficient transfer of developed technologies must be from DRDO to private industries for the mass production. तो private sector को भी मध्य technology दिया जीवो
जोटा कि ऑलरेडी सरकार को पाखे अच्छी सेटा को प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जीवो टेक्नोलॉजी सो दैट प्राइवेट सेक्टर भी सही वेपन या से जो मास से जो जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट्स गुड़िक अच्छी ताकू मध्य से माने मास लेवल रे प्रोड्यूस करि परिबे. It suggested the creation of Department of Defense Science, Technology and Innovation under the Defense Ministry. तो गोटे डिपार्टमेंट मध्य खोलिबा पई ये सजेस्ट करिछि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री नाटी कोन विजय राघवन पैनल रिपोर्ट. नेक्स्ट Idiot Commission report. National Human Rights Commission stressed on the need to implement the Vico Ramji Idiot Commission report. तो National Human Rights Commission जो हमारा अच्छी National Human Rights Commission stressed the need to implement Vico Ramji Idiot Commission report. से कौन exactly report देइछंती एवं ताको implement करिबा पई से कहूची. The committee The Idiot Commission submitted its report in January 2018. The committee has recommended for setting up permanent commission for the permanent commission गोटे गठन करा जीवो कहा पई ना nomadic, semi-nomadic and denotified tribes. कहा मान को पई nomadic, semi-nomadic and denotified tribes. The Renke Commission report of 2008 had roughly estimated their population to be between 10 to 12 crore. तो रेनके कमीशन रिपोर्ट भी मन रखते that is also related to nomadic, semi-nomadic and denotified tribe. ठीक अछि तो से रेनके कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करा जाई नथिला. The commission also maintained that the government must act to repeal the Habitual Offenders Act 1952 if not appointment of a representative of denotified tribal community with the nodal officers as stipulated in the act. It also suggested आहुरी कौन से सजेस्ट करूची कि जो nomadic and semi nomadic and denotified tribe अछंती सेमानकु जो normal SC ST OBC जो अच्छी कैटेगरी सेथिरे इंक्लूड न करिवा पाई. ठीक अछि. nomadic semi nomadic denotified tribe होचंती जो माने जेमती आपण जरुआ ट्राइब इन अंडमान से माने एबे भी सेम टाइप ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टाइल रे ही से माने बसवास करूचंदी. जेमती देखिबे बहुत गुडे ट्राइबल अछंती जेमती ओडिसा रे भी बहुत गुडे ट्राइब्स अछंती से माने मेन स्ट्रीम रे इंक्लूड हेई सारलेनी. सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इनटू इन देयर लाइफ सिस्टम. से चेंजेस गुडी का आसीची मेन स्ट्रीम सहित से माने इंक्लूड हेई परलेनी. नाउ दे आर गेटिंग all those kind of benefits, but ebe bhi tribal communities achhanti they are still living in their own kind of setup jemti aguru 200-500 वर्ष पूर्व भी थिले आज भी सेमती से माने अच्छंती. तो सी जो मानकु गोटे सेपरेट से मानक पई परमानेंट कमिशन गोटे बिल्ड करबा पई सजेस्ट करा जाउची. को कमिटी द्वारा विको रामजी इडिट कमिशन रिपोर्ट रे सेटा को सजेस्ट करा दिछि. एटा को गठन करबा पई स्ट्रेस के दोची या स्ट्रेस के दोची नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोची स्ट्रेस. Vaibhav Fellowship Scheme. The government unveiled a Vaibhav Fellowship to bring Indian origin researchers to higher educational institutions. Particularly जो माने बाहर रहुचंती जो रिसर्चर्स गुडिको से माने इंडिया रे में मध्य किछि समय रिसर्च काम रे दियंतु. तो सेहिति पई वैभव फेलोशिप स्कीम को रखा जाइछि. At least 2 months per year ये जो बाहर रिसर्चर गुडिको या इंडियन origin हेइथिबे but they are based in foreign countries, they will contribute in Indian research atmosphere or Indian research ecosystem. Opportunity to work for a minimum 1 month to maximum 2 months a year with a research institution or an academic institution in India. Next, PM Yashasvi Scheme. Yashasvi Scheme रे कोन अछि देखिबा. Scholarship scheme for other backward class OBCs, economically backward class EBCs and denotified nomadic tribes students. Under this scheme, students can avail pre-matric scholarship from 9 to 10. So pre-matric यानी कि क्लास 9 to 10 मध्य रे समान को स्कॉलरशिप प्रदान करा जिवो and post matric scholarship for their higher studies at post matriculation or post secondary stage. तेणु matriculation पर भी समान को स्कॉलरशिप दिया जिवो
to help them to enter into the higher study. Students who excel in their studies also get an opportunity of scholarship to study in the top class schools and colleges. Okay, तो जदि जाने कि एक्सेल करूची बेटर स्कूल बेटर कॉलेजेस रे तार पढ़िबार इच्छा अछि त स्कोप अछि ताको मध्ये फाइनेंस करा जिवो ताको मध्ये हेल्प करा जिवो टू गेट enroll in that particular schools or institutions. Colombo Security Conclave. India's National Security Advisor Ajit Doval took part in the 6th NSA meeting of the Colombo Security Conclave. Colombo Security Conclave ro member states को माने अछंती देखंतु India, Sri Lanka, Mauritius and the Maldives. India, Sri Lanka, Mauritius and Maldives. Bangladesh new member हिसाब रे join करिछि, while Seychelles participated as an observer state. केवे एस्टाब्लिश करा जायथिला 2020 रे एटा को होस्ट की करथिला मॉरिशस करथिला वर्चुअली होस्ट करूथिला नुवा मेंबर के मन रखंतु फर्स्ट बांग्लादेश एग्जिस्टिंग को माने मालदीव मॉरिशस श्रीलंका इंडिया ऑब्जर्वर की अछि सेचेल ओके अर्जेंटीना इन ब्रिक्स ब्रिक्स ब्लॉक आपण जानी थिबे ब्राजिल रशिया इंडिया एंड साउथ अफ्रीका रो ये होची ब्लॉक राइट 6 न्यू मेंबर्स ऐड हिचंदी membership of Argentina, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Egypt and UAE was due to take effect from January 1, 2024. तो 1st January 2024 रु ए कंट्रीज गुडी को जॉइन करिवार थिला ए कंट्रीज गुडी को जॉइन करिवार थिला कि अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, साउदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूएई. देखो ब्रिक्स होची ए वर्षर मस्ट क्वेश्चन आसीबार बहुत चांसेस अच्छी तेणु एटा को केयरफुली देखिबे. अर्जेंटीना has announced that it will not join the BRICS bloc of developing economy. कारण अर्जेंटीना refused to join this BRICS bloc. the reason होची कोन जो अर्जेंटीना रो न्यू प्रेसिडेंट जे आसिले तांकर स्लाइटली अलाइनमेंट विथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल जेतु यूएस एवं इजराइल को तार क्लोजनेस अच्छी प्रेसिडेंट रो सेति पई अर्जेंटीना last moment re join kala nahi refused to join that. Why? Because BRICS bloc main purpose kona to counter the western countries hegemony or dominance, to counter the western countries hegemony or dominance. The BRICS group of emerging countries has formed in 2006 by Brazil 2006 रे एटा को स्टार्ट करा जायथिला एवं कहा द्वारा BRIC चारोटी कंट्रीज थिले ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना was formed in 2006 रे करा जायथिला एवं एस साउथ अफ्रीका 2010 रे जॉइन करथिले. नेक्स्ट जो मेंबरशिप गुडी को अछंती से माने होचन इथियोपिया नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 एंड नंबर 5. ठीक अछि पांचटी नुवा कंट्री एटा को मन रखिबे एवं 6 जण जॉइन करिवार थिले जणे लास्ट मोमेंट रे बैकआउट कला से होची अर्जेंटीना. Schengen visas for Paris Olympic. France was the first European country to issue digital Schengen visas to visitors for the Paris Olympic. तो प्रथम यूरोपियन कंट्री हिसाब रे से कोन इशू करूथला डिजिटल Schengen visa. ओके डिजिटल Schengen visa से पेरिस ओलंपिक पाई से इशू करथिला. जो Schengen एरिया कहले कोन बुझू ना includes 23 of the 27 European Union member countries along with associated neighbors like Switzerland, Norway, Ireland, Iceland particularly and Liechtenstein जहाँ भी अपना प्रोनाउंस करन एटा को. France had announced plans to shift entirely to online procedure for the 70,000 French Schengen visa. Okay, तो प्रथम यूरोपियन कंट्री हिसाब रे Schengen visa को पेरिस ओलंपिक पई जे इशू करथला ता ना होची फ्रांस कंट्री द्वारा इशू करा जायथला. नेक्स्ट देखिबा स्नो लेपर्ड.
Kyrgyzstan has officially declared the snow leopard as its national symbol. Snow leopard India रा कोउ जगह देखा जाए जनरली हिमालयन रीजन रे आपन को देखिबा को मिलिबो हिमालयन स्टेट्स रे आपन को देखिबा को मिलिबो स्नो लेपर्ड तो स्नो लेपर्ड को नेशनल एनिमल भावरे या नेशनल सिंबल भावरे को कंट्री यूज करूची Kyrgyzstan hosted inaugural global snow leopard forum in 2013 in the capital Bishkek. During this event, the Bishkek Declaration on Snow Leopard Protection was unanimously adopted. The Bishkek Declaration is related to Snow Leopard Protection. এটা কো মনে রাখতে হবে Bishkek Declaration is related to Snow Leopard protection. The Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program was initiated with the collaboration of representatives from 12 snow leopard range countries including India. Global Firepower Ranking 2024. Global Firepower Ranking 2024. Global Firepower Ranking ର main purpose କ'ଣ? Purpose ହେଉଛି to identify the most powerful military country. Most powerful military country ଏବଂ କିଏ most powerful military country? United States according to the Global Firepower Ranking 2024. Global Firepower Ranking 2024 हिसाब रे এবং ତା ପଛକୁ या ତା ତଳକୁ କିଏ ଅଛି Russia and then the China. India has the fourth strongest military of evaluated 145 countries. तो India रा rank होची fourth in terms of global firepower ranking in 2024. South Korea overtook UK and became the fifth most powerful country. Pakistan is at number 9 while Bhutan has the least powerful military in the world. ठीक अछि सबटो अधिका खर्च भी के करछि US करछि then China then Russia and then the India. Green Fuels Alliance India. TN Global Investors Meet 2024 Denmark announced a Green Fuels Alliance India initiative. एटा को मन रखथिबे कहा द्वारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हेतला 2004 डेनमार्क रे सेटको ता द्वारा अनाउंस करा गला ग्रीन फ्यूल अलायंस करिगी ग्रीन फ्यूल अलायंस इनिशिएटिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन थला टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया by establishing an ecosystem that encourages collaboration among business government entities research institutions and financial stakeholders. Sustainable energy growth in India कहा द्वारा ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया तो नारू भी आपण जानिथिबे ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया तो सबु स्टेक होल्डर्स मान को इंक्लूड करिगे India is working towards achieving net zero emission by 2070. Net zero emission. The GFAI is demonstrative of activities under Green Strategic Partnership signed between India and Denmark in 2020. So GFAI, Green Fuel Alliance India, ta under Green Strategic Partnership sign kara jaichi India and Denmark bhitare in 2020 re. Nipah virus was first identified in 1998. Nipah virus first identified प्रथमे केबे देखिबा को मिलथला 1998 कहा द्वारा तार बाहक किए carried by fruit bat may also be transmitted by contact with infected animals from person to person via close contact. So person to person भी अच्छी infected animals को थर भी होची and who is carrying the virus particularly fruit bat. The University of Oxford, UK have launched first in-human vaccine trials for the deadly Nipah virus. The Global Cooperation Barometer 2024. The barometer was developed in collaboration with the management consultant McKinsey and Company. McKinsey and Company द्वारा ये जो barometer Global Cooperation Barometer 2024 को launch करा जायथला पांचटी पिलर्स आपन को देखिबा को मिलिबो ट्रेड एंड कैपिटल इनोवेशन टेक्नोलॉजी क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल हेल्थ एंड वेलनेस पीस एंड सिक्योरिटी तो एटा को मन रखते हुए ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 मैकिन्जी एंड कंपनी 19th NAM summit. The 19th summit of the NAM was held in Kampala, Uganda. 19th
NAM Summit Non-Aligned Movement and कोडी conduct करा जाइथला Kampala, Uganda. The theme of the event was deepening cooperation for shared global affluence. Deepening cooperation for shared global affluence. The summit usually takes place every 3 years. ये थीम को मन रखते थीम बेले बेले प्रश्न आसुची कि थीम कौन थिला deepening cooperation for shared global affluence. The summit usually takes place every 3 years. प्रति 3 वर्ष को थरे एटा को कंडक्ट करा जाए. Uganda has taken over the chair from Azerbaijan to run until 2027. 2027 पर्यंत तार चेयरपर्सन किए रहउचंती एबे उगांडा एटा को मन रखथिबे अफ्रीकन कंट्री. The summit adopted the Kampala declaration. The summit adopted the Kampala declaration. प्रश्न आसी पारे Kampala declaration is related to what? At present, NAM has 120 member states, 17 observer countries, 10 observer organizations. NAM does not have a permanent secretariat, does not have a permanent secretariat or a formal founding charter, act or treaty. Kichi formal nahi, only informal organization. State First Defender 2024 exercise. State First Defender 2024 exercise. NATO's largest exercise. NATO's largest exercise. The first large-scale NATO exercise where new defense plans will be put into action. NATO, there is a high chance कि ସେମାନେ NATO पचारନ୍ତି कारण NATO को नहीं कि काफी हलचल अपन को देखिबा को मिलिबो. न्यू मेंबर्स जॉइन करूचंती. कमेंट सेक्शन में जणाइबे लेटेस्ट मेंबर किए अछि नेटो रो. ता छडा अपन देखिबे नेटो जो यूक्रेन सहित वार हो नेटो चांसेस अछि पचारिबार. तो स्टेट फर्स्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज कहा सहित एसोसिएटेड NATO सहित फर्स्ट लार्ज स्केल NATO exercise where the new defense plans will be put into action. Approximately 90,000 troops from the US and other NATO member nations are slated to participate. ST status to the Hathe community. Himachal Pradesh has issued notification gives scheduled tribe status to the Hathe community. ये Hathe community विषय भी question आसी पारे. Which of the following is related to the Hathe community? या कौन पाई सेटा न्यूज रे थिला ताकू scheduled tribe रो status दिया गला ST status. GI tags for over 17 products. The first product in India to be accorded with GI tag was Darjeeling tea. प्रथम GI tag Darjeeling tea को मिलिथिला 2004-5 रे एवं इठी आपण देखिबे रिसेंटली जहा को GI tag को मिलिची स्पेसिफिकली जनवरी मासरे कहा को मिलिथिला. ओडिसा रे जदी आपण देखिबे ढेंकानाल मगजी खजुरी गुड़ सिमिलपाल काई चटनी नयागढ़ कंटेमुंडी ब्रिंजल डोंगरिया कोंद एम्ब्रॉयडरी शॉल कोरापुट कलाजीरा राइस एंड लांजिया सौरा पेंटिंग. रेजुपेवे टेक्नोलॉजी. The border road organization will build roads using the indigenous technology जार ना होची रेजुपावे टेक्नोलॉजी along Indo-China border in the Arunachal Pradesh. Indo-China border in Arunachal Pradesh रे ସେମାନେ indigenous technology use करिकी ସେମାନେ कोन करछन्दी road construction करछन्दी जहा technology रे ना होची रेजुपावे. This is developed by the premier road research organization, that is the border road organization. ता छड़ा CSIR Central Road Research Institutes ये मध्य सेमानक सहित कोलाबोरेट करूछन. West Bengal State Song and State Day. The West Bengal government has issued a notification declaring Poila Boishakh, the first day of the Bengali New Year, as the state day. Poila Boishakh, the first day of Bengali New Year, as the state day. हिसाब रे ताकू रिसेंटली नोटिफाई करा जाइछि. सेकंड होची बांग्लार माटी बांग्लार जल ये होची स्टेट सॉन्ग हिसाब रे डिक्लेयर करा जाइछि. ताकू किए लिखचंदी रविंद्रनाथ टैगोर as the state song. Athpadi Conservation Reserve. The government of Maharashtra has declared a new conservation reserve in the forest land of Sangli district, namely Athpadi Conservation Reserve. तो आटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व टी कोठी देखिबा को मिलिबो. फर्स्ट होची महाराष्ट्र, सेकंड होची कोन ना को जागा रे अछि सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र रो सांगली डिस्ट्रिक्ट रे एटा को देखिबा को मिलिबो. एवं सांगली डिस्ट्रिक्ट से फॉरेस्ट लैंड को कंजर्वेशन रिजर्व हिसाब रे आइडेंटिफाई करा जाइछि. स्टार्टअप रैंकिंग 2022.
Tamil Nadu was among the 5 states placed under the best performer category in the states startup ranking 2022. 5 states placed under the best performer category kahaku? Tamil Nadu ku. Gujarat, Karnataka, Kerala, Himachal Pradesh are the other states recognized under this top category. In the first 2 editions, Tamil Nadu was placed at the bottommost category of emerging ecosystem. तो Tamil Nadu best performer हिसाब रे सेटा को मन रखियो आपण. Greenviro Global have received the National Startup Award 2023 under the Sustainability Champion category at the same event. Greenviro Global. Achya Technology Private Limited, another startup from Tamil Nadu, won the Genesis Innovators of the Year Award of the National Startup Award 2023. Operation Amrit, Kerala. The Kerala Drug Control Department launched test in the first week of January 2024 called Operation Amrit. तार full form कौन देखंतु? Antimicrobial Resistance Intervention for Total Health. Antimicrobial Registration Intervention for Total Health. ठीक अछि? तार main purpose कौन? To prevent the overuse of antibiotics in the state. To prevent overuse of antibiotics of the state. इनते आपण देखिथिबे किछि गोटे असुस्थ हेले आमे एंटीबायोटिक को कंज्यूम करूचे तेनु prevent overuse of antibiotics. The department takes regulatory action for optimizing the use of antibiotics by preventing over the counter sale of antibiotic. Antibiotic रो जो excessive sale होची ताकू कंट्रोल करिवा पई. Operation Amrit is aimed at conducting surprise raids in the retail medical shops जो माने कि बहुत हमरो मेन जो सबु इंडियन मानकर हमर बिहेवियर कोन कि मेडिसिन दुकान रो मेडिसिन खाइबा तो मेडिसिन दुकान वाले कोन करते एंटीबायोटिक बिकिबारे व्यस्त थांती कोन पई सेमान को तो सेल होची ना. नेक्स्ट टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू. द Andhra Pradesh government unveiled the world's tallest statue, B.R. Ambedkar in Vijayawada. B.R. Ambedkar in Vijayawada, Andhra Pradesh Sarkar Udara, tallest, standing 206 feet from the ground. The statue of social justice statue will in the list of the top 50 tallest statue in the world. Statue of social justice बोली कहा जाउची Ambedkar कर tallest statue Vijayawada. आंसर करिवे कमेंट सेक्शन में कि सेकंड टॉलेस्ट को स्टेट रे अछि बी.आर. अंबेडकर कर स्टैच्यू. सेकंड टॉलेस्ट को स्टेट रे अछि यूची फर्स्ट यानी कि हाईएस्ट. नेक्स्ट पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल. पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल focuses on the wildlife conservation with a particular emphasis on the hornbill. 4 species of the bird, red great Indian, oriental pied and endangered Rufous naked are found in the Pake Tiger Reserve, Koti achi, Arunachal Pradesh. Pake Tiger Reserve, Koti achi, Arunachal Pradesh. This area is also home to the Nishi, the largest tribal group in the Arunachal Pradesh. So Arunachal Pradesh re Pake Tiger Reserve re sabutu largest community tribal जो देखा जाए Nishi. The festival aims to recognize the role played by the Nishi in the conserving hornbills in the Pake Tiger Reserve. तो सीतपें ता ना होची फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल. ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पचरा जाई अछि तो एटा को केयरफुली देखिबे. पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल. Vulture Restaurant Jharkhand. The restaurant has been set up in Kodarma district. Vulture Restaurant कोठी अछि झारखंड रे. It aims to conserve the fast dwindling population of the bird species due to rampant use of drugs in the livestock. तो जनरली जो हमरो डाइक्लोफेनाक यूज होची जोथि पई कि किडनी फेलियर होची कहारो वल्चर मानकर एवं वल्चर आपण देखिथिबे जो हमरो फूड चेन रो गोटे पार्ट भी ठीक अछि एवं वल्चर मानकर मेन काम कोन जो वेस्ट मटेरियल गुडी को अछन ताकु से माने क्लीन करंती पर्टिकुलरली. Vulture restaurant. Carcasses of livestock from the gosalas and the municipalities will be served as the food to the scavenger birds at the Vulture restaurant and a demarcated feeding site. The Kodarma Vulture restaurant has been established at Gumo under the Tilaya Nagar Parisad as it considered to be feeding site for the birds. ठीक अछि feeding site bird और generally सेमान को कोन दिया जाउची खाइबा पई डाइक्लोफेनाक फ्री एनिमल कार्कासेस
Startup ecosystem ranking 2022 was prepared by the Department for Promotion of Industry in Internal Trade. केतोटी कैटेगरी रे से माने विभक्त करंदी स्टेट्स गुड को 5 कैटेगरीज बेस्ट परफॉर्मर टॉप परफॉर्मर लीडर एस्पायरिंग लीडर emerging startup ecosystem. The ranking are based on the initiatives taken to develop startup ecosystem for promoting budding entrepreneurs. Kolam tribes, the central government extended basic facilities to the endangered Kolam tribe under the Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan. जनजाति जो पीएम जनमन अच्छी आपण देखिथिबे जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान कोलम ट्राइब को सेठी इंक्लूड करा जायछि या बेसिक फैसिलिटीज दिया जाउछि कोलम ट्राइब होचंदी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कैटेगरी रे कोठी देखिबा को मिलंदी महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश रे कोठी देखिबा को मिलंदी महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश रे तो को फैसिलिटी समान को दिया जायछि हेल्थ एंड एजुकेशन ठीक अच्छी by strengthening local primary care health care centers and special training to teachers special training एइथिपाई कारण बहुत अछंदी लैंग्वेज पाई से माने दे लीव स्कूल्स और ड्रॉप आउट रेट्स काफी हाई देखिबा को मिले अंडर द स्कीम रोड कनेक्टिविटी विल बी इम्प्रूव्ड these villages from the mandal headquarters also focusing improving internal roads providing portable drinking water electricity or solar energy LPG gas stove cylinders etc ये सब फैसिलिटी समन को दिया जाउछि नेशनल यूथ अवार्ड 2024 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज सिलेक्टेड बैसाथी भारत ऑफ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट फॉर द नेशनल यूथ अवार्ड बैसाथी भारत ऑफ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट फॉर द नेशनल यूथ अवार्ड It was conferred annually to individuals and voluntary organizations. Both individuals को भी दिया जाए एवं व्यक्ति किंबा organization, voluntary organizations जो माने कि youth development रे contribute करते. This award will be presented during the 27th National Youth Day to be observed on the January 12. So January 12 रे National Youth Day जोटा पालन करा जाए सेबे से award टे दिया जाए. MS स्वामीनाथन Award Haryana Agricultural University's Vice Chancellor Professor B.R. Kambose has been honored with the prestigious MS Swaminathan Award. This is the recognition of his contribution as a scientist and extension specialist in the field of agronomy. Award ti keve create kara jaythila 2004 re. It recognizes lifelong contributions of distinguished individuals who have had a global impact on the agriculture, food security and sustainability. MS स्वामीनाथन अवार्ड कहा मिली प्रोफेसर B.R. कंबोज सविता कंसवाल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू honored the late Savita Kanswal posthumously with Senjing Norge National Adventure Award 2022 Senjing Norge National Award 2022 तंगु सम्मानित करागला in land adventure. Savita made history by becoming the first Indian woman to climb Mount Everest and Mount Makalu within a remarkable 16-day period. 16 दिन भितरे first Indian women to climb both Mount Everest and Mount Makalu within a remarkable within the 16-day period. ठीक अछि सविता कंसवाल. प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार is given to children with exceptional abilities and outstanding achievements. The awards are given to children in the age group of 15 to 18 years for their excellence in 7 categories. They are bravery, art and culture, environment. So 26 January को दिया जाए अपन मन जानी थे innovation, science and technology, social service. नहीं 26 को सेटा ब्रेवेरी अवार्ड दिया जाए एटा होची राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अलगा हिसाब रे सेटा को दिया जाए डिफरेंट ओकेजन दिया जाए बट जनरली जनवरी टाइम रे दिया जाए 5 रु 18 वर्ष भितर जो माने डिफरेंट कैटेगरीज रे कंट्रीब्यूट करिसंदी जनरल देखिबा को मिलिबो ब्रेवेरी आर्ट एंड कल्चर एनवायरनमेंट इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोशल सर्विस स्पोर्ट्स दैट डिजर्व द नेशनल रिकॉग्निशन. ठीक अछि तो ये थिला आपनकर नेशनल इंटरनेशनल एंड स्टेट लेवल करंट अफेयर्स गुडी को प्रथम जिनस मु कहि रखे मु स्टार्टिंग रो भी कहिथिली जो माने देखिथिबे
मुझे एनवायरनमेंट कवर करी नाही जोटा कि मु ऑलरेडी सेपरेट वीडियो रे कवर करिछि इकोनॉमिक्स कवर करी नाही सेपरेट रे करिछि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करी नाही सेपरेट रे करिछि रिपोर्ट एंड इंडिसेस भी मु सेपरेटली कवर करिछि तो ऑलमोस्ट ये जो कवरेज हेइथिला मोस्टली जनवरी रो आई थिंक अगस्त पर्यंत हेइथिला मु एटा को देखि नेबी क्रॉस चेक करने भी तो से जनवरी अगस्त पर्यंत आपण ये सेगमेंट टी को मिलिबो नाही मंथली करंट अफेयर्स रे जो मंथ टू कवर हेइ नथिबो सेटा को मु कवरेज करई नेबी एवं या छड़ा आपण एक्सक्लूसिव जदि एनवायरनमेंट इको साइंस टेक एंड रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस विषय देखिबा पय चाहंती आपण सिंपली स्टडी IQ PCS रो प्लेलिस्ट को जाईकी सेठी देखि परिबे आपण ये सब गुडी को मेंशन अछि ठीक अछि तो PDF दरकार तो ऑब्वियसली स्कैन करि नेबे PDF पय टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करबा पय स्कैन करिकि PDF आपण को मिलि जबो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे जनवरी मासर एटा नेक्स्ट टाइम फेब्रुआरी मार्च ये भाव में कंप्लीट आई थिंक सेप्टेम्बर पर्यंत एटलिस्ट आम ताको कवर करनवा ठीक अच्छे आज पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे थैंक यू।